Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Open your book, page number 18. Question number 2. Match the parts of the parts to its functions. Part and function. First, cerebellum receives impulse from your eyes, ears, nose, and skin. Medulla controls heartbeat, breathing, etc. Cerebellum controls muscles and balance of the body. Thyroid gland controls the speed of the chemical reaction in the body. Adrenal gland controls the amount of glucose in the blood. Pancreas prepare the body for action. Question number 3. Name the two kinds of the nerve cells or how nerve cells different from other cells. इसका आंसर है काइंड्स ऑफ नर्व सेल्स. सबसे पहले आपने लिखना है देयर आर टू काइंड्स ऑफ नर्व सेल्स. नंबर 1 एक्सोन, नंबर 2 डेंड्राइट्स. आगे नर्व सेल्स. The nerve cells has a cell body made up of large nucleus and dense granulated cytoplasm, which gives the cell body to grayish projection. The projection may be long or short branched. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 4. व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन और व्हाट रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन अ क्विक एंड सडन मूवमेंट विच डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स और इनवॉलेंट्री एक्शन. इसमें हमारे पास पार्ट ए था व्हेन डस्ट ब्लोज इनटू योर आइज द आइज ब्लिंक, और व्हेन ब्राइट लाइट्स शाइन्स इनटू योर आइज प्यूपिल ऑफ द आई गेट्स स्मॉलर. नेक्स्ट हमारे पास द डायग्राम शोज पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. आपने लेबल करना है. ए में आपने लिखना है लेफ्ट किडनी, बी में यूरेटर, सी में ब्लैडर और डी में यूरेथ्रा. आगे नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए टू डी एंड राइट द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. क्वेश्चन 5. राइट फंक्शन ऑफ ईच पार्ट. इसमें हमारे पास फंक्शन द नेफ्रॉन कंटेन्स अ सोल्यूशन ऑफ वेस्ट मटेरियल सच एज यूरिया. दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड यूरिन. It goes through collecting duct and ureters to the bladder, where it is stored temporarily and then passed out by the body through the urethra. Fill in the blanks to describe the process of filtration of body by the kidneys. The outer part of the kidney, called the cortex, contains millions of the tiny tubes called nephrons. Each nephron starts in the cup-shaped structure called Bowman's capsule, which contains a bunch of capillaries called glomerulus. As blood flows through the capillaries, substances such as water and dissolved salts are filtered as they pass into the Bowman's capsule. Large molecules such as proteins cannot pass through the walls of the capillaries, and so they are left in the blood. The liquid which passes into the Bowman's capsule contain mainly water and waste materials. Useful substances such as glucose are reabsorbed by the blood vessels. The rest of the liquid passes down the long looped part of the nephron, which now contains waste materials such as urea. This solution is called urine.